Good morning, viewers. This is Sukhvinder here. I hope all of you are doing very well. And today, again, a new topic. Of course, it is very old topic. Normally, you must have come across this topic in class 11th, and it holds equal importance throughout the life because invitations and replies, they're part of our life. Invitations, they are actually defined as written request for a person's presence at an event or a request to do something. So we request to someone to attend any specific occasion और सेलिब्रेशन प्रोग्राम और इवेंट. तो इनविटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी और उसका एक प्रॉपर मेथड है which we have to follow when we are writing an invitation. So dear students and viewers, I would like to request you to go through the whole video till the end so that you come to know everything about invitations and replies. Today I will be taking up the topic formal invitation. So we have both formal and informal invitations. Formal invitations में जो हम relatives को, friends को, acquaintances को, clients को और members हैं जो public में किसी department के members हैं उनको हम भेजते हैं. और जो इनफॉर्मल इनविटेशन है वो सिर्फ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और जो बहुत ही ज्यादा आपके पर्सनल, कॉर्डियल और इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं उनमें आप उसको भेजते हैं. So informal and formal both are important because all these invitations are extended to people who are known to us and sometimes who are only formally known to us. So let us see what is an invitation. First, it's a formal request to someone to attend any specific occasion, celebration or program or event. ये तो नॉटशेल में आपको मैंने लिख के दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए. Now we have to understand that we have two types of invitations, formal and informal. For today's video, I have picked up the topic formal invitation. So formal invitation, जैसे हम पूरा ये topic complete करेंगे, you will be able to write a good formal invitation at the end of this video. Okay. So पहले आपको इन बातों का ध्यान देना है कि जब आप एक formal invitation लिखते हैं तो आपको कौन सी tips follow करनी है so that you write a good formal invitation. First of all, it is written in a box and it is to be written in third person. Then details like address, dress code or any other instructions are written at the bottom, to the left or the right side as per choice. Subject matter is generally written in the center. No abbreviations to be used. Simple present tense is used. Tense का बड़ा confusion होता है लोगों को कौन सा tense use करें, तो simple present tense आपको use करना है. और आपने अगर मेरी पहले की videos देखी होंगी तो मैंने पूरे tenses बहुत डिटेल में आपको explain किए हुए हैं. You can go back to the topics and see over there. So simple present tense use करना है आपको formal invitation में. आपकी जो word limit है, for exam purpose it is 50 words. Then each entry to be mentioned in a separate line. For example, name of the persons who is or are inviting. मतलब जो invite कर रहा है उसका आपको पहले लिखना है नाम वगैरह, ठीक है. फिर formal expressions like request the pleasure of your company. जैसे आपके notice writing में there are some standard expressions like it is to inform and it is to notify. So these are some standard expressions which we need to write when we are writing some writing compositions. Okay. So these are short compositions. Word limit का भी ध्यान देना आपको. Standard expressions भी use करने हैं. So formal expressions like request the pleasure of your company. Then time and date of event. Why it is very important? अगर आप time नहीं बताओगे किसी को कि किस time में होगा तो आपको पता नहीं चलेगा. Date of event क्या है, कौन सी तारीख को ये event हो रहा है, ये सारे details ऐसे हैं जो आपको उसमें mention करने. Then purpose and occasion of invitation. Purpose क्या है, occasion क्या है invitation का. For RSVP, address and telephone number is given at which the invitee may contact for any queries. Name of chief guest of the program may be given. Now, formal invitation for marriage, birthday, auspicious occasions. Let us see how we write a formal invitation for the birthday function of your son.
ये आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं ताकि जब आप लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, यू विल बी एबल टू राइट इट वेरी वेल। एक फॉर्मेट आपको क्लियर समझ आएगा कि किस फॉर्मेट में हमको लिखना है। तो हमने मोटी मोटी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको जस्ट नटशेल में आई विल एक्सप्लेन यू द टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, it has to be written in a box. Simple present tense is to be used. Then a formal invitation in the card format is written in the third person. Third person का आपको ध्यान रखना है कि हमें person कौन सा use करना है, third person. Third person, first person, second person, इसका भी मैंने आपका वीडियो एक बनाया हुआ है. So please go through those topics and revise them for performing better in the exams. देन एक लेयर्ड फॉर्मेट में लिखा होता है, कोई एब्रिविएशंस यूज नहीं होंगे. Each detail in a formal invitation is to be written in separate lines. Then formal invitations include details like name, designation of the sender, reason for the invitation, time, date and venue of the event. अगर आपके यहाँ कोई चीफ गेस्ट आ रहा है तो उसका भी आप नाम मेंशन करेंगे. RSVP आप मेंशन करते हैं. For RSVP, address and telephone number, it is given at which the invitee may contact for any queries. Now, when we talk about RSVP, what do you understand by RSVP? RSVP is mandatory and it means please reply and is written at the bottom left side of the invitation. ठीक है? तो जो फॉर्मल इन्विटेशन है वो एक फॉर्मल रिप्लाई की भी उम्मीद करता है. उसमें ये होता है कि आप एक्नॉलेज करें कि आपको इनविटेशन मिला है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या आप उसको रिग्रेट कर रहे हैं कि यू कांट, आई मीन यू वांट टू एक्सप्रेस द इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट एट द इवेंट. देन अ फॉर्मल रिप्लाई इज आल्सो रिटन इन द थर्ड पर्सन. तो पहले हम एक फॉर्मल इनविटेशन यहाँ पे देखेंगे. बर्थडे के लिए आपने इनवाइट किया है. Mrs. and Mr. Chawla request the pleasure of your company on the 5th birthday of their son Rahul on Monday 28 Jan 20. अब इसमें कुछ भी आप 22 लिख सकते हैं right now क्योंकि Jan जा चुका है. So you can mention at 7 p.m. at Konark Hotel, MV Road, Delhi. RSVP 13 Akbar Bhavan, New Delhi. So this is for. Now this is a formal invitation for the marriage ceremony of your daughter. इसमें भी आपको सारे वही डिटेल ध्यान रखना है. You have to mention the name of the person who is extending the invitation. ठीक है? तो इसमें आप देख लीजिए कि Mrs. and Mr. Rahul Sharma solicit your gracious presence on the auspicious occasion of the marriage of their granddaughter Sonali, daughter of Mrs. Savita and Mr. Rahul Sharma, with Sridhar, son of so and so. Date लिख लिए, time लिखा हुआ है, place लिखा हुआ है, venue लिखा हुआ है. All the necessary details are mentioned in the card. This is formal invitation. सारी चीजें इसमें mention है. अब आपको RSVP में या मदन शर्मा फोन नंबर मेंशन होता है ताकि आप उनसे उनको रिप्लाई करके बता सके कि आप आएंगे या आप नहीं आएंगे. अब आ जाइए, ये तो आपके हो गए जहाँ पे आपने मैरिज कार्ड लिखना है या किसी का बर्थडे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मल इनविटेशन फॉर स्कूल इवेंट्स, एग्जीबिशंस फॉर जनरल पब्लिक. Now this is a question which has been written, collected for you so that आप एक example भी देख सकते हैं. You are a student of Lakshmi Public School, Model Town, Delhi. The school is holding its, let me take your highlighter. So this is very important, you know, you have to underline these things so that when you're writing an invitation with the help of these, these points, you can underline these points when you want, when you're writing an invitation. क्योंकि उस वक्त आपको इससे हेल्प होगी, आप कोई चीज मिस नहीं करेंगे. जो आपके पास नहीं है, you will have to invent those details. The education minister has consented to be the chief guest. तो यहाँ पे जब आपको chief guest का नाम mention करना है तो you have your education minister. Design an invitation card to be sent to the parents and other invitees. Again, word limit is 50 words. Now this is the proper
get up, or how the invitation will appear before you after writing. The principal, staff and students of Lakshmi Public School, Model Town, Delhi, request the pleasure of your company on annual day celebration on Sunday, 24th August 2022 at 5:30 p.m. in the school auditorium. Honorable Education Minister has very kindly consented to be the chief guest. Then again, now RSVP, admin officer, and numbers. Special instructions are there because Education Minister has consented to be the chief guest. So everything has to be in a proper decorum has to be followed. हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में होगी. तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी इसमें दी गए हैं कि दिस कार्ड एडमिट्स ओनली 2. ऐसे नहीं कि क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर आ रहे हैं हर एक का मन करता है कि बड़े अधिकारियों को मिले, तो इसमें आपको सिर्फ 2 को लेके आ सकते हैं आप एक कार्ड पे. एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाय 4:30 PM, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है कि जब आपके ऑनरेबल मिनिस्टर्स आते हैं तो एक पहले एक पूरी टीम चलती है, वो पूरा सिक्योरिटी चेक्स करके एंड देन दे ट्राई टू गिव अ मैसेज कि ओके नाउ एवरीथिंग इज क्लियर एंड नाउ यू कैन कम. तो आप लोग एज गेस्ट हु आर अटेंडिंग द प्रोग्राम, they are to be seated by 4:30 PM if the program is starting by 5. तो मिनिस्टर के आने से पहले सबको सीट मिलनी है. और नोट क्या लिखा है? एंट्री फ्री. वो इसलिए लिखा है कि ऐसा ना हो कि इस कार्ड के बदले आपसे कोई मनी चार्ज करे या कुछ भी. सो दिस इज अ जनरल look of the invitation card. Now, formal invitation to preside over, inaugurate or judge events. Now you are Neha, Nakul. देखिए फॉर्मल इन्विटेशंस भी 2 तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं, एक कार्ड के रूप में, एक लेटर के रूप में. तो लेटर के रूप में भी आप अभी देखेंगे इसको. द प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेरी and Cultural Society of Government Model Senior Secondary School Sector 19 Chandigarh, you have to organize an interzonal declamation competition on the topic communication skills are very important in modern world at 10+2 level. So you wish to invite Dr. Shailesh Gupta, an eminent educationist, to preside over the function to be held on 16th August 2022 at 9:30 PM. Now let's see how it appears. Here, the name of the sender, that is school, Government Model Senior Secondary School Sector 19 Chandigarh is there. Date लिखी हुई है, subject है invitation to preside over interzonal declamation competition. So, now these are all the details. और पूरा प्रोग्राम का पूरा उन्होंने चॉकआउट करके आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है. देन दे आर आस्किंग यू काइंडली कंसेंट टू प्रिसाइड ओवर इन द अबव सेड प्रोग्राम. योर सिंसियरली नेहा. Okay, so these are formal invitations which are very clear if you just have a look at it. Letter form का भी बिल्कुल clear है किस तरह से आपको लिखना है. Card form का भी एकदम आपके पास clear एक look है. Okay, marriage card, birthday invitation, and then here for judging and all. Now these are questions for practice, which I think so if you practice all these questions, you will be able to have a good collection of revision of your invitation, formal invitation. Okay, so this is all for today. Tomorrow we'll again have a new topic, and that is informal invitation. क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि 12th और 11th के जो बच्चे हैं उनको एक नटशेल में राइटिंग स्किल्स की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मिल जाए. ठीक है. So thank you very much, and if you feel that my contents are good enough for you to circulate to others, please do share and subscribe if not done so far, so that you get a notice and information about my latest videos. So thank you very much. Have a nice day. Please do solve all these questions which I have collected for you. Questions for practice. Okay, there are 5 questions. 5 questions भी अगर आप complete कर लोगे तो आपका formal invitation complete हो जाएगा in all respect. So finally, which you are supposed to take care of, those things are that it has to be written in a box, simple present tense is to be used, and it third person is to be used. Okay, और आपको layered format में लिखना है.
स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस यूज करने हैं. फॉर्मल इन्विटेशंस में सारे डिटेल्स, नेम, डेजिग्नेशन एंड रीजन फॉर द इन्विटेशन, टाइम, डेट, वेन्यू, ये सब आपका मेंशन होगा. RSVP also, which means please reply. Okay, so thank you very much. Have a nice day. God bless you all. Thank you.